Hey friends, let's see today's current affair. The first topic is brucellosis disease. A girl from Kerala gets affected, mostly found in cattle breeds. तो ये cattle breeds में ज़्यादातर पाया जाता है brucellosis disease. A 7-year-old girl gets affected, right? तो it's a bacterial infection that is spread from animal to person. तो animal to person ये spread होता है. Next है हमारा self cloud. तो a terrifying self cloud recently appeared in UK हरिद्वार. UK इंडिया वाला है उत्तराखंड. A self cloud or Arcus cloud generally forms along the leading edge of thunderstorms. तो ये जो self cloud है और Arcus cloud दोनों सेम ही है. तो ये कब अकर होते हैं जब thunderstorms आता है, right? तो produced by thunderstorm. It's formed when cloud and dense air is forced into a warmer air mass by wind. Next है हमारा Urban 20 Summit, या you can say U20. It provides a platform for cities from G20 countries to facilitate discussions on various important issues of urban development. तो ये जो है वेरियस इंपॉर्टेंट इशू ऑफ अर्बन डेवलपमेंट पे डिस्कशन करने के लिए प्लेटफॉर्म देता है हम लोग को, इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, सोशल इंक्लूजन, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रपोज कलेक्टिव सॉल्यूशंस, राइट. लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 12, 2020. तो 2017 में इसे लॉन्च किया गया था. लेट्स सी अनदर टॉपिक. लार्जेस्ट डिस्प्ले ऑफ लंबानी आइटम्स गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. As part of the 3rd G20 Culture Working Group, in a short you can say CWG, meeting in Hampi, a Guinness World Record was created for the largest display of Lambani items, right? Next है हमारा World Population Day 2023. तो देखते हैं इसका थीम क्या है. तो it observed on 11 July every year. तो every year इसको 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है. For what? To raise awareness about global population issues and the importance of reproductive health and rights. Established by, किसने establish किया था इसको? The United Nations in 1989. थीम क्या है 2023 के लिए देखते हैं. Unleashing the power of gender equality. And next है हमारा uplifting the voices of women and girls to unlock our world infinity possibilities, right? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नारी अदालत यूनिक इनिशिएटिव. इंडियन गवर्नमेंट इज लॉन्चिंग अ यूनिक इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश वुमेन कोर्ट्स एट द विलेज लेवल, राइट, फॉर इश्यूज सच एज डोमेस्टिक वायलेंस एंड प्रॉपर्टीज राइट. इट विल स्टार्ट इन 50 विलेजेस ईच इन असम एंड जम्मू कश्मीर इन अगस्त. तो असम में और जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट होगा कब? अगस्त में. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.